So we will start. This is the last part of the lecture series that I was teaching for the last 3 days, and we stopped yesterday at the challenges in the search for cancer cure. So while the molecular defects, lack of proper checkpoints present in cancer cells often enhance their sensitivity to cytotoxic agents, they can also increase their resistance. What are checkpoints? Checkpoints क्या है? यहाँ की सेंटेंस में लिखा है lack of proper checkpoints. सर माइटोसिस जब सेल डिवीजन हो रही थी तो उसमें कुछ चेकपॉइंट्स होते हैं, आप चेक होता है कि रेप्लिकेशन एस्पेस सही से हुआ है या नहीं हुआ, सेल साइकिल देखा जाता है. ठीक है, checkpoint. But what are checkpoints? Checkpoint inhibitors भी यूज होते हैं. सर ये इम्यून सिस्टम को अवॉइड करने के जी, इम्यून सिस्टम जो है ताकि आम सेल्स पे अटैक ना कर. ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, इसकी फिजियोलॉजी यही है. बट चेकपॉइंट्स क्या है? आप इसको एज अ वर्ड ले रहे हैं, मैं आपसे एज अ नाउन पूछ रहा हूँ. रिसेप्टर्स कह सकते हैं. रिसेप्टर्स क्या है? रिसेप्टर्स नहीं होते, प्रोटीन्स. रिसेप्टर्स प्रोटीन्स होते हैं. और चेकपॉइंट इनहिबिटर्स ऐसी चीज जो चेक पॉइंट्स को इनहिबिट करे. ठीक है, तो वो एज अ थेरेपी यूज होते हैं. चेक पॉइंट इनहिबिटर्स जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर्स. तो चेक पॉइंट्स ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम की चेक रखती है कि वो इम्यून सिस्टम आपका आउट ऑफ कंट्रोल न हो जाए. जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे कि वायरसेस के केस में या SARS-CoV-2 के केस में बहुत सारे मल्टी ऑर्गन फेलियर्स के केस हुए जिसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है इट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल. इसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म भी कहते हैं. साइटोकाइंस का एक तूफान आ जाता है. ठीक है, और जो इम्यून डिस्ट्रक्शन है वो फिर स्पेसिफिक नहीं रहती बल्कि वो तमाम सेल्स की एक कोलैटरल डिस्ट्रक्शन जो है वो शुरू कर देता है. तो इस चीज को रोकने के लिए कुछ प्रोटीन्स हैं जिनको चेक पॉइंट्स कहा जाता है. कैंसर के केस में वो इन्हीं प्रोटीन्स को यूज करता है अपने बचाव के लिए, टू सेव इटसेल्फ अगेंस्ट द इम्यून सिस्टम. तो एक थेरेपी अभी आगे पढ़ेंगे भी, एक लाइन ऑफ थेरेपी है दैट इनहिबिट्स द चेक पॉइंट्स, जो चेक पॉइंट्स को रोके ताकि इम्यून सिस्टम स्पेसिफिकली जाके कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करे. तो ये भी एक लाइन ऑफ थेरेपी है. अब कैंसर्स जो सेल्स होते हैं, मोलेकुलर डिफेक्ट्स होते हैं, वो अभी आगे भी हम देखेंगे कौन से हैं और कैसे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है फॉर डेवलपिंग और फॉर एडमिनिस्टरिंग डिफरेंट kind of therapies. While the molecular defects, lack of proper checkpoints present in cancer cells often enhance their sensitivity to cytotoxic agents, they can also increase their resistance. For example, where a normal cell might die by apoptosis in response to DNA damage because of the p53 action, a cancer cell may escape the death because its p53 is lacking. अपने आप को म्यूटेट कर देता है, p53 को म्यूटेट कर देता है ताकि वो इस एपोप्टोटिक डिस्ट्रक्शन से बच सके. This is how like a cancer cell evolves. Now, if you are developing an ideal treatment, in ideal cases, there will be drugs that will only be lethal to some lesion present in the cancer cells alone. अब अगर हम चेक पॉइंट इनहिबिटर्स को यूज कर रहे हो तो कोई भी ड्रग स्पेसिफिक नहीं होगी. इट विल जस्ट स्टॉप योर इम्यून सिस्टम. वो उस चेक पॉइंट जो बिहेवियर है उसको रोक देगी जिसकी वजह से फिर कैंसर तो स्टॉप हो सकता है, कुछ और ही प्रॉब्लम स्टार्ट न हो जाए. तो यहाँ पे
अब एक आइडियल ड्रग वो होगी जो कि स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स के केस में ही चेक पॉइंट्स को रोकेगी, नॉर्मली बाकी जगहों पर चेक पॉइंट प्रोटीन्स को नहीं रोकेगी. दिस इज द पर्सनलाइज्ड स्पेसिफिक थेरेपी. Such a treatment is said to be synthetic lethal, means it kills only in partnership with the cancer specific mutation. It will only work there where it finds a specific kind of mutation, where it finds a specific type of behavior, and that behavior is specific to cancer cells. Normal cells में वो mutation नहीं होती. तो इस तरह से वो cancer cells को फाइंड आउट करती है. कोई भी अभी आगे कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे. सो कैंसर्स एंड ट्यूमर्स आर जेनेटिकली अनस्टेबल. उनमें बहुत से रिपेयर मैकेनिज्म्स जैसे P53 जो है ये लैक करता है, ये फंक्शनल नहीं होता. सो द कैंसर थेरेपीज दे यूज द सेम थिंग टू किल specifically the cancer cells. ये उसी की कैंसर सेल्स ही की एबिलिटी को, उसी की पहचान को यूज करते हुए they try to kill the cancer cells. For example, we have PARP inhibitors, PARP inhibitors, जो कि PARP के फंक्शन को इनहिबिट करते हैं. Specifically kill cancer cells that have defects in BRCA1 और BRCA2 genes. ये इनहिबिटर्स जो हैं ये उन सेल्स को जाके टारगेट करते हैं जिसमें BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशन हो. इसको ये नहीं पता कि कैंसर सेल्स कौन से हैं और नॉर्मल सेल्स कौन से हैं. इट विल ओनली टारगेट दोज सेल्स व्हिच हैव दिस BRCA1 एंड BRCA2 म्यूटेशन, और वो सेल्स कैंसर सेल्स ही होते हैं. Mutations in the BRCA1 and BRCA2 genes predispose humans to cancer of the breast. ठीक है, ये मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में ज्यादा प्रेवलेंट है. While BRCA1 and BRCA2 are needed for the repair of DNA double strand breaks, ये जो दो प्रोटीन्स हैं इनका फंक्शन क्या है? ये डीएनए डैमेज को रिपेयर करती हैं. स्पेसिफिकली डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स होती हैं रेप्लिकेशन में, वहां पर ये आकर डीएनए डैमेज को कंट्रोल करती है. Single strand breaks are repaired by other machinery involving an enzyme called PARP or poly-ADP ribose polymerase. एक एंजाइम है जो कि सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक्स को रिपेयर करता है. BRCA1 और BRCA2 they repair the double strand breaks during replication. If a single strand break happens, ये जो एंजाइम है नॉर्मली, और ये हो रहा है नेचुरली, आपकी बॉडी में रेप्लिकेशन हो रही है, सेल्स जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, हो सकता है उस दौरान सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक्स हो, डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स हो, और ये प्रोटीन्स जो हैं ये जाके रिपेयर कर रहे हैं. Now the drugs that block PARP activity kill BRCA deficient cells with extraordinary selectivity while having little effect on normal cells. ये आगे आप देखेंगे कि कैसे. These drugs also appear to be applicable to cancers with other mutations that cause defects in the cell's homologous recombination machinery, a small though significant proportion of cancer cases. My lab here in the Gurdon Institute is focusing on how cells respond to and repair DNA damage within the cells of our body. We're interested in this from an academic perspective, but for many years we've also been very interested in the idea that out of this new knowledge that we're generating, there could be therapeutic opportunities for new drugs, for example for cancer, but also for other diseases. So the developments that we're talking about today relate to a brand new anti-cancer drug called Lynparza, also known as olaparib. And what this new drug does is work against serous ovarian cancer through a mechanism that has not been exploited before in the clinic. The basis of this new drug is to target DNA repair pathways within human cells. So it turns out that every cell in our body is sustaining DNA damage
And that damage needs to be recognised and it needs to be repaired. Because if the damage isn't repaired, the cells of our body die. The DNA is the genetic blueprint which needs to be kept intact. Now, the way that works within our cells is that every cell is sustaining DNA damage, but there are certain proteins in the cell, molecular policemen, if you like, whose job is to carry out surveillance, looking for DNA damage, and when it occurs, to recognise the damage and then repair it. PARP stands for poly-ADP ribose polymerase. So that's a rather complicated name, but in reality what PARP does is fairly simple. It is a molecular policeman. It's a protein that carries out surveillance activities within the cell, not normally doing very much, but when DNA damage occurs, PARP binds to and recognises the DNA damage. And then, like any good policeman, I guess, sets off the emergency services. And those emergency services are the DNA repair pathways that PARP recruits to sites of DNA damage to mediate the repair. What this drug does is take advantage of a vulnerability, a weakness in cancer cells that isn't present in normal cells. And very simply, what this means is that normal cells in these patients have two ways of repairing DNA damage. The PARP inhibitor, by binding a protein called PARP, inhibits one of those pathways, but the normal cell still has the other pathway, so they can survive. The cancer cells in these patients, however, lack this backup pathway, so they only have the PARP pathway. And so the cancer cells, when they're treated with the PARP inhibitor, this takes away their only way of repairing DNA damage. That's how the drug kills the cancer cells, but not the normal cells of the patient. So this news represents a wonderful step forward for certain ovarian cancer patients with these hereditary mutations in BRCA1 and BRCA2. But clinicians and researchers such as myself are also very, very excited by the fact that other opportunities seem to exist. This backup DNA repair pathway is also defective in other cancers such as breast cancer and also others. So hopefully over the next year, or few years, hopefully we'll be seeing the development of PARP inhibitors against a wider set of cancers. जी समझ आई तो उसने कहा जी क्या होता है सर नॉर्मल सेल्स में दो पाथवेज हैं जो कि सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक्स या डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स के लिए, जबकि कैंसर सेल्स में सिर्फ एक पाथवे है, तो उसी को टारगेट करते हैं, दैट्स व्हाई वो रिपेयर नहीं कर पाते और जो नॉर्मल सेल्स हैं वो सर्वाइव करते हैं. ठीक है, तो नॉर्मल सेल्स में जैसा इन्होंने फरमाया कि दो पाथवेज होते हैं, एक होता है पार्ट पाथवे और दूसरा BRCA1 और BRCA2 रिपेयर पाथवे. तो कैंसर सेल्स है उनमें BRCA1 और BRCA2 जो पाथवे है वो लैग करता है, वो खराब है, लेट्स से वो म्यूटेटेड हो चुका है, तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है पार्ट पाथवे का. अब ये ड्रग जाती है बॉडी में. अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी ड्रग स्पेसिफिक नहीं होती, जस्ट गोज एंड हैव अ ब्रॉड इफेक्ट. वो नॉर्मल सेल्स में भी पार्ट पाथवे को अफेक्ट करेगी, कैंसर्स में भी और नॉर्मल सेल्स में भी. लेकिन नॉर्मल सेल्स में अल्टरनेटिव पाथवे मौजूद है. अगर वो पार्ट को मिस कर दे तो BRCA1 BRCA2 रिपेयर पाथवे आके दोबारा से जो भी ब्रेक्स हैं, सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड या व्हाटएवर, उनको रिपेयर कर देगा. बट इन कैंसर सेल्स देयर वोंट बी एनी रिपेयर. तो ये पार्ट इनहिबिटर जो है, दैट्स हाउ इट स्पेसिफिकली गोज इन एंड kills the cancer cells. ये नॉर्मल एक थ्योरी. सर कैंसर से कभी न कभी तो नॉर्मल सेल आ ही ना. जी, अब कैंसर बन चुका है ना. हाँ, कैंसर पार्ट इनहिबिटर आप उसी वक्त देते हैं जब किसी को कैंसर हो जाता है. जो नॉर्मल है उसको तो ये दवाई नहीं दी जाएगी. इट्स अ ड्रग. सो द ड्रग इज ओनली एडमिनिस्टर्ड व्हेन द पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद maybe ovarian cancer, maybe breast cancer, maybe any other type of cancer. तो आपने देखा बड़ी सिंपल. सो ये जब भी डेवलप हुई होगी तो जिसने भी ये सोचा, इट्स अ वेरी सिंपल आइडिया. इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं कि अंदर क्या हो रहा है. द आइडिया इज वेरी सिंपल. जो प्रपोजल आपका होता है रिसर्च, दैट इज अ वन लाइन प्रपोजल. उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती. अगर आपने जो प्रपोजल लिखा है वो वन सेंटेंस, वो क्वेश्चन अगर ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा, इट मीन वो आपको भी समझ नहीं आ रहा. आपने कहीं से देखा और बातों में बातें डाल दी हैं, जी वो जीन उसको इफेक्ट करता है, वो जीन उसके अंदर ये पाथवे, उसके अंदर. इट डजंट वर्क लाइक दिस.
योर प्रपोजल शुड बी अ वन लाइनर। वो बाकी सारी कहानी लिखी होती है, लेट्स से रेस्पिरेटरी वायरसेस ये करते हैं वो करते हैं, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, वो एक जब मैं लिखता हूँ वो आखिरी लाइन होती है, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, दैट्स अ वन लाइन। उससे पीछे वो सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है। तो यहाँ भी जिसने भी ये ड्रग डेवलप की, द आइडिया वाज वेरी सिंपल कि कैंसर सेल्स में म्यूटेशन है, उसी म्यूटेशन को एक्सप्लॉइट कर रही है ये ड्रग और ट्रीटमेंट जनरेट कर रही है। सर, अगर हमारे पास P53 भी म्यूटेटेड है फिर वो सेल कैसे डाई होगा? P53 हमारे पास चेक पॉइंट जैसे ट्यूमर सप्रेसर जीन है, रेटिनोब्लास्टोमा भी सेम की तरह, अगर में म्यूटेशंस हो उसी कैंसर सेल्स के अंदर, पाथ इनहिबिटर्स को हमने इनहिबिट कर दिया जो कि BRCA1 भी हमारे पास म्यूटेटेड है, वो सेल्स अब कैसे किल होगा अपनी जो P53 के प्रोसेस के थ्रू? क्या P53 इज ओनली प्रोसेस? एक रेटिनो या पहला सवाल यहाँ पे ये है कि जिन सेल्स में, पहला सवाल है कि जिन सेल्स में पाप इनहिबिटर्स आप यूज कर रहे हैं क्या वो P53 के जरिए ही किल होते हैं? क्या कोई और पाथवे है या उनके अंदर कोई और फंक्शनैलिटी लैकिंग हो जाती है कि वो किल हो जाए, या P53 इज द ओनली? Let's ask this question. Okay, let's ask this question from the chat GPT. What your question is? What your question is like? If a cancer cell lacks P53 pathway, then how come PARP inhibitors tag it or kill it? अब ये टेक्स्ट बुक को देखेगा, it will go through the data, search the textbooks, whatever. Okay, PARP inhibitors kill P53 deficient cancer cells by trapping PARP enzymes on damaged DNA, causing double-strand breaks that cannot be repaired if the cell also has a BRCA mutation, leading to a crisis called mitotic catastrophe. While P53 normally triggers apoptosis in response to DNA damage, its absence forces the cell to keep dividing with severely broken chromosomes. This structural chaos ultimately destroys the cell during division, completely independent of the P53 pathway. इसके इसने सोर्सेज भी दी हैं, आई मीन ये वो पेपर्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को, यानी इसमें फिर P53 पाथवे इन्वॉल्व नहीं है, डीएनए डैमेज हो रहा है, it accumulates and finally a situation comes where the cell cannot survive further, उसकी तमाम फंक्शनैलिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। क्लियर? बाकी आप ये पब्लिकेशंस पढ़ें। Targeting homologous recombination deficiency in ovarian cancer with PARP, targeting DNA repair for cancer treatment, lessons from PARP inhibitor trials, INO1001, a novel inhibitor of poly-ADP ribose, enhances tumor response, and a lot of things. ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा। This is how like the whole thing generates. You think about a pathway, and then certain questions start emerging in your mind, and then you go in big other papers. आप further reading शुरू करते हैं कि आया वो क्वेश्चन किसी और ने भी पूछा है, कोई पब्लिकेशंस आई हैं कि नहीं आई। अगर नहीं आई, then your question is a valid proposal. अगर आ चुकी है तो आप फर्दर पढ़ेंगे और फर्दर उसमें क्या है, किसी जगह कोई गैप है, तो यू नीड टू वर्क ऑन द गैप्स कि जिस चीज पे पहले काम नहीं हुआ। तो 2-3 तरह के प्रपोजल्स होते हैं। एक प्रपोजल ये भी हो सकता है कि इस चीज पे पहले काम हुआ है लेकिन हमारे पाकिस्तान में नहीं हुआ, तो हम लोकल पॉपुलेशन की एक डाइवर्सिटी है, जेनेटिक्स की, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी डिफरेंट है, तो हम यहाँ की पॉपुलेशन में वो देखना चाहते हैं
कि आया वो सिमिलर म्यूटेशंस आ रही हैं कि नहीं। अदरवाइज जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, आप भी पढ़ेंगे और आपके दिमाग अगर आप उसको समझ रहे हैं, द फर्स्ट थिंग इज वेदर यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। आप जो भी पढ़ रहे हैं आपको समझ आ रही है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो फिर आपके जहन में क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे कि ये प्रोटीन कैसे काम कर रही है ये, एंड देन यू टेक फर्दर एंड फाइनली यू कम अप टू अ पॉइंट वेयर यू स्टार्ट राइटिंग अ प्रपोजल टू कैरेक्टराइज द होल थिंग। जैसे इन्होंने कहा कि वो एपोप्टोसिस फिर हो कैसे रही है अगर p53 भी डैमेज्ड है। सो द आंसर इज, सिंपल आंसर इज, द killing happens independent of the p53। अब उसका मैकेनिज्म क्या है, उसकी वो पूरी पब्लिकेशंस आप पढ़ लें कि कैसे फिर वो किल करता है, क्योंकि यहाँ टाइम कंस्ट्रेंट भी है तो हम फिर फर्दर उन चीजों में नहीं जा सकते नॉर्मली। सो व्हाट हैपेंस हियर, सो ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन BRCA1, BRCA2 and PAR they are involved in the repair mechanisms. So normal cell has two alternative DNA repair pathways. So a single strand break happens, repair by pathway 2 still possible. So this is the normal cell. Drugs दोनों में काम कर रही है. So it's not specific to cancer cells only. It will come and bind to the normal cells as well. But the normal cells has the second option, while the cancer cells, they don't have the second option and they will die. Now, यहाँ पे एक और चीज भी है, आपने देखा ये एंजाइम जो है पार्ट इनहिबिटर, अब ड्रग रिपर्पजिंग होती है, ठीक है। ड्रग रिपर्पजिंग एक बहुत आजकल हो रही है, एक ड्रग को डिफरेंट डिजीजेस पे चेक कर रहे हैं और काफी यहाँ प्रोजेक्ट्स भी हैं iccbs में। तो वहां पे सिमिलर स्ट्रक्चर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, लेट्स से पार्ट ई की तरह के, आप उसका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे और इसी तरह का कोई और एंजाइम भी है, whether that enzyme can be used as an analog for the PAR, क्या दूसरे एंजाइम्स या एंजाइम सेट्स को भी यूज किया जा सकता है, या लैब में ऐसे एंजाइम सिंथेसाइज किए जा सकते हैं जो कि यही काम करें जो कि PAR इनहिबिटर्स कर रहे हैं। So small molecules can be designed to inhibit specific oncogenic proteins. केमिस्ट्री लैब में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप इस तरह के स्मॉल मॉलिक्यूल्स डिजाइन और कर रहे होते हैं, लोग कर रहे होते हैं, रेगुलर बुनियादों पे करते हैं और चेक करते हैं, कैंसर सेल लाइंस पे स्क्रीन करते हैं, देखते हैं कि आया वो काम कर रहे हैं। सम मॉलिक्यूल्स they work on cancer cells but then they are cytotoxic, उनकी टॉक्सिसिटी लेवल बहुत ज्यादा होता है, या आप उन्हें लेकर जाए माउस मॉडल्स में तो बिकॉज ऑफ द एक्टिव इम्यून सिस्टम वो काम नहीं करते। ह्यूमंस में भी ऐसे ही है। अगर आप बहुत सारे पब्लिकेशंस पढ़ें तो वहां पे लिखा होता है न्यूड माइस, इम्यून सप्रेस्ड माइस। जो ड्रग्स वो चेक करते हैं, वो जिन चूहों में चेक करते हैं वो क्या होते हैं, न्यूड मींस उनमें कोई इम्यून सिस्टम या क्रिटिकल इम्यून सिस्टम के जो जीन्स है वो शट ऑफ हुए होते हैं या वो इम्यून सप्रेस्ड होते हैं। तो वो ड्रग उस जगह तो काम कर रही होती है, बट वंस यू टेस्ट द ड्रग इन ए फुली फंक्शनल बायोलॉजिकल सिस्टम तो वहां पे वो फेल हो जाती है। तो बहुत सारी ड्रग्स जो लैब में बनती हैं वो लैब में ही फेल हो जाती हैं, कुछ पास होती हैं, वो एनिमल मॉडल्स में चेक करते हैं, वहां पे काम कर रही है तो फिर फर्दर ह्यूमंस में चेक होगी, हो सकता है एनिमल मॉडल की स्टेज पे ही फेल हो जाए। ह्यूमंस में जब चेक होती है देन वो फिर क्लिनिकल ट्रायल आ जाता है, पूरी दुनिया में चेक होती है। तो नॉर्मली 10 साल लगते हैं एक ड्रग मॉलिक्यूल को मार्केट में आते हुए, 10 साल। और ड्रग इंडस्ट्री में ये नॉर्मल सी बात है कि 1 in 100 मॉलिक्यूल जो है या 1 in 1000 वो फिर मार्केट में आता है। 1 in 100 या 1 in 1000 ये मॉलिक्यूल स्क्रीन हुए और फिर जो मार्केट में आते हैं वो एक होता है। तो वो जो आपसे पैसे लेते हैं वो अपनी तमाम रिसर्च के लेते हैं जो सारी फेल भी हुए। यहाँ पे तो R&D नहीं है, बट जहाँ पे हो रही है, जैसे फाइजर काम कर रहा है, उनकी अपनी R&D लैब्स हैं, GSK है, ठीक है, वो सारे मॉलिक्यूल्स को चेक कर रहे होते हैं। तो वो फिर आपसे जो कीमत वसूल करते हैं वो अपनी तमाम R&D और मार्केटिंग और जो भी स्ट्रेटजीज उनकी है, इन द एंड दे कैलकुलेट एंड देन टेक द प्राइस फ्रॉम द जनरल
पब्लिक। तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है इसमें, काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है कंपनीज को, क्योंकि हर मॉलिक्यूल जो लैब पे बनता है वो मार्केट में नहीं आता। So let's take the case of chronic myelogenous leukemia, ठीक है, एक liquid tumor है CML. CML is usually associated with a particular chromosomal translocation जिसको Philadelphia chromosome भी कहते हैं। एक translocation होती है, एक mistake है, chromosomal disruption है, और इसको हम Philadelphia chromosome भी कहते हैं। That results from chromosome breakage and rejoining at the sites of two specific genes, ABL and BCR. The fusion of these genes creates a hybrid gene called BCR-ABL. हमने पहले पिछली स्लाइड्स में ट्रांसलोकेशन के बारे में पढ़ा, ये वही केस है जहाँ पे टू जीन्स मिस्टेकनली आपस में, या उनके पार्ट्स जो है मिस्टेकनली आपस में ड्यूरिंग रिकम्बिनेशन, जब मायोसिस होती है तो उसमें रिकम्बिनेशन क्रॉस ओवर्स होते हैं, हमने पढ़े थे ना क्लास में, तो वहाँ पे ये इस तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं, और एक काइमेरिक यानी ये गलत किस्म का क्रोमोसोम बन जाता है जिसे हम काइमेरिक क्रोमोसोम या फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम भी कहते हैं। और ये दो जीन्स, दो क्रोमोसोम्स या जीन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, BCR and ABL, that codes for a chimeric protein consisting of the N-terminal fragment of BCR fused with the C-terminal portion of ABL. हर प्रोटीन के जैसे जीन्स के 5 प्राइम और 3 प्राइम रीजन्स होते हैं, इसी तरह प्रोटीन्स के N और C टर्मिनल पार्ट्स होते हैं, वो ओरिएंटेशन शो करता है प्रोटीन्स की। तो यहाँ पे इस काइमेरिक प्रोटीन में जो N-terminal fragment है वो BCR का होता है, और जो C-terminal portion है that belongs to the ABL. So this is how the thing happens. The translocation occurs. So one orange part comes and fuses with the red part of the ABL gene, and then transcription happens. Both are coding parts, और ये transcribe होते हैं एक mRNA में, और वो mRNA further translate होता है एक प्रोटीन में। लेकिन ये प्रोटीन एक ट्रंकेटेड प्रोटीन है, ये एक नई प्रोटीन है जिसका फंक्शन जो है वो chaotic है, नॉर्मल नहीं है। So conversion of the AB1 or ABI proto-oncogene into an oncogene in patients with chronic myelogenous leukemia. The chromosome translocation responsible joins the B gene with the A gene the B gene belongs to the chromosome 22 and the AB gene belongs to chromosome 9, thereby generating a Philadelphia chromosome. The resulting fusion, so this is the fusion, protein has the N-terminus of the BCR, while the C-terminus belongs to the AB, tyrosine protein kinase. The AB kinase domain becomes inappropriately active, driving excessive proliferation of a clone of hemopoietic cells in the bone marrow. अब ये जो प्रोटीन है, it is hyperactive. It continuously expresses, और हमारे पास जो सेल्स होते हैं hemopoietic bone marrow cells जो हैं, they are uncontrollably they grow uncontrollably, और जब ये uncontrollably grow होते हैं, so you get, or the patient gets the myelogenous leukemia. Because cancer is not a disease as we have been discussing, it's an abnormal growth of a cell population. अब यहाँ पे एक जो डिस्कवरी हुई इमेटिनिब, एक ड्रग है, ठीक है, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, ये इस जीन को इनहिबिट करता है यहाँ पे AB1 और ABI whatever टायरोसिन काइनेज, यहाँ से इस पर्टिकुलर जगह पे जाके इसको इनहिबिट कर देता है। So ये किस लेवल पे चलेगा? प्रोटीन, of course the cells are being made, maybe because this is expressing, so maybe at the expression stage this inhibitor, it inhibits certain function, it goes in and maybe attaches itself
to the tyrokinase portion and inhibits its expression. अभी आगे स्ट्रक्चरल वो आ भी जाएगा, आप देख लेंगे कि कहाँ पे जाके बाइंड होता है. So the chimeric B and A protein is an obvious target for therapeutic attack. तो अगेन पहले आपको सारा मैकेनिज्म समझना होगा, जो भी मैकेनिज्म है, जो फुल कैरेक्टराइजेशन है, प्रोसेस है, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ वेयर यू शुड गो एंड डिसरप्ट द प्रोसेस. कहां पर हम जाके इस प्रोसेस को डिसरप्ट कर सकते हैं. यही इनोवेशन है जो हो रही है. सैडली हमारे मुल्कों में कोई भी ऐसी इनोवेशन नहीं होती. जो ड्रग्स भी आप देख रहे हैं वो बाहर से आ रही हैं. दे आर टेकिंग द प्राइस. कैंसर की ड्रग्स जो है बहुत महंगी होती हैं. सर वो जो कहते हैं सिविल में एक है, वो चाकू है, उससे कैंसर का इलाज होता है, वो जो बहुत मशहूर है कि ओके, ये बच्चे भी हमसे पूछते थे एमफिल में. इसको कहते हैं प्लेसिबो. जब भी कोई ड्रग टेस्ट होती है, जो लोग ड्रग ट्रायल्स कर चुके हैं, जिनको पता है, तो जब वो कोई गोली देते हैं तो उसके साथ एक खाली गोली भी देते हैं. उसमें कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता. तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेशेंट्स हैं वो प्लेसिबो लेकर भी ठीक हो जाते हैं. ठीक है, या नफ्सियाती, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं. ये ऐसे ही होता है, जैसे आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं वो आपसे मीठी मीठी बातें करता है तो आप जल्दी से. और हमारे पॉपुलेशन में ये मैंने अपने खानदान में बहुत देखा है, पीपल डिवेलप दिस हैबिट ऑफ गोइंग टू द डॉक्टर्स, क्योंकि खानदान के अंदर उनकी कोई भी बात नहीं सुनता. यहाँ पे कोई साइकोथेरेपी का भी कोई सिस्टम नहीं है. बाहर मुल्कों में तो लोग जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, अपनी वो जो भी रोना धोना है वो सुनाते हैं. या आपने देखा होगा चर्चेज में, यूएस में उनका एक सिस्टम है जहाँ वो जो फादर होता है वो एक पर्दा लगा के आपकी बात सुनता है. वहाँ जो कोई भी बंदा जाता है अपनी सारी कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, व्हाटएवर. सो इट्स अ वे ऑफ लाइफ, अपनी भड़ास निकालना है. दिस इज अ वे. जैसे आप बहुत से आपके जो पीर फकीर होते हैं, लोग उनके पास जाते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, वो दम करते हैं, जो भी करते हैं. देयर आर मेनी फेक्स बट पीपल गो देयर. मैं इसका मजाक नहीं उड़ाऊंगा. मैंने बहुत ही पढ़े लिखे लोगों को देखा जिनको पता है कि वो नहीं, उनसे कुछ भी नहीं हो रहा, बट स्टिल दे गो देयर. ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ जाके वो अपना जो भी रोना धोना है वो करते हैं, और पीर साहब उनके सर पे हाथ रखता है, जो भी है, एंड दे आर क्यूर्ड. और जनरली ऐसे भी बहुत से केसेस हैं कि लोग खुद ब खुद ही ठीक हो गए. ऐसे बहुत से रियल केसेस भी हैं. मैं बीबीसी पे एक पढ़ रहा था, इसको ग्रेड 4 कैंसर था, उसने अपनी डाइट प्लान और अपनी लिविंग स्टाइल को चेंज किया, एंड आफ्टर 3 years द कैंसर डिसअपीयर्ड. सो इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन. ये आपकी अपनी एक सिचुएशन है कि आपकी सिचुएशन में है, यू हैव द गट, यू हैव द पावर टू रेजिस्ट. और बायोलॉजिकल सिस्टम्स की एक डेफिनेशन ही ये है कि ये सर्वाइव करते हैं. जब इंसान मर भी रहा होता है तो सेल्स पूरी फाइट दे रहे होते हैं कि वो मरे ना. सो दैट इज द रीजन व्हाई इट टेक्स सो मच, व्हाई इट टेक्स सो टाइम फॉर अ पर्सन टू नेचुरली डाई. खैर, वो जो आप बात कर रहे हैं तो वो यही है कि वो उनके जहन में ये आ जाता है कि ये जो भी चीज है ये उनको ट्रीट कर रही है. एंड समहाउ इस पे एक मूवी भी है, टेक्सास बायर्स क्लब के नाम से एक मूवी है, नाम के एक्टर का मैकॉनही है. इसको HIV इन्फेक्शन हो जाता है और डॉक्टर उसे कहता है 3 महीने का टाइम है, आप मरने वाले हैं, आप जो भी काम वाम करने हैं. तो वो क्या करता है कि उसको पता चलता है कि मैक्सिको में बहुत सी ड्रग्स ऐसी हैं जो कि FDA अप्रूव नहीं है, बट स्टिल दे कैन वर्क. तो वो शुरू में US और मैक्सिको आपस में, आपको पता है, साथ है. ही स्टार्ट्स गोइंग टू मैक्सिको, वो ड्रग स्मगल करना शुरू कर देता है अपने लिए, और बाद में वो एक क्लब बनाता है. उसको पता चलता है कि US में तो हजारों ऐसे पेशेंट्स हैं जो ये ड्रग्स ले नहीं सकते, तो वो उल्टा इसको कमाई का जरिया बना लेता है. वहाँ से ट्रक भर के ला रहा है एंड स्टार्ट अ क्लब. और ये रियल में एक बंदा था, बाद में ये 10 साल तक जिया. So he survived for 10 years instead of what the doctors told him for 3 months. तो ये इंसान की एक वो है कि they resist, they can. So imatinib, जिसका ट्रेड नेम है Gleevec, ठीक है, ये भी आप एक डिफरेंशिएशन समझे. एक होता है जेनेरिक नेम और एक होता है ब्रांड नेम. ठीक है, जेनेरिक नेम है
इमेटिनिब, ब्रांड नेम है ग्लीवैक। मुख्तलिफ जब पेटेंट होता है तो वो एक ही कंपनी बना रही होती है, और जब आप पेटेंट कर देते हैं तो द पेटेंट सर्वाइव्स फॉर 5 years, फॉर 10 years, फॉर व्हाटएवर यू डिफाइन, ठीक है। और उसके बाद वो पेटेंट खत्म हो जाता है तो और कंपनीज भी वो ड्रग जो है वो मॉलिक्यूल बना सकती है। तो आप देखते हैं पैरासीटामोल जो है ये मुख्तलिफ नामों से बहुत सारी कंपनीज जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला एक ही होता है, जेनेरिक होता है, लेकिन ब्रांड नेम्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे इमेटिनिब है और इसका जो ट्रेड नेम है, ब्रांड नेम है, वो है ग्लीवैक। ये ब्लॉक करती है इस टायरोसिन काइनेज को। तो काफी महंगी दवाई है ये कैंसर पेशेंट्स को। Gleevec, imatinib mesylate, mechanism of action. Within the wall of the gastrointestinal tract, peristalsis is achieved through communication between nerves and smooth muscle cells. This communication is coordinated by a complex network of innervated cells known as interstitial cells of Cajal, or ICCs, that surround and intercalate between these smooth muscle cells and peripheral nervous system elements. Embedded in the ICC cell membrane is KIT, a receptor tyrosine kinase, essential for ICC differentiation, proliferation, and the formation of a functional ICC network. KIT functions by activating signal transduction cascades that influence downstream processes. Under normal conditions, KIT activation requires binding of its ligand, stem cell factor, which induces receptor dimerization and structural changes in the KIT receptor. The fully activated KIT receptor then directs phosphorylation and activation of targets in a number of downstream signaling pathways, which influence processes such as cell proliferation, survival, and apoptosis. If ligand is absent, wild-type KIT will remain autoinhibited. However, KIT mutations that disrupt its juxtamembrane domain can release this autoinhibition in the absence of ligand binding, allowing for constitutive oligomerization and activation of the KIT receptor. These mutant KIT proteins can drive continuous oncogenic signaling, leading to an increase in cell proliferation, growth, and survival, which can ultimately lead to the formation of a gastrointestinal stromal tumor, or GIST. The majority of GISTs have constitutive KIT activity, which can be inhibited by the tyrosine kinase inhibitor, imatinib mesylate. In vitro data demonstrates that imatinib competitively binds to the ATP binding pocket of both active and inactive KIT, preventing or inhibiting activation. This is followed by inhibition of related downstream signaling. As a result, imatinib induces apoptosis in many KIT-positive GIST cells. In vitro studies also suggest that imatinib may induce a portion of KIT-positive GIST cells to become quiescent or metabolically active but non-dividing. Quiescent cells retain the ability to re-enter the cell cycle and proliferate. The imatinib mechanism of action observed in vitro suggests that its continual presence may be important for preventing KIT-positive GIST cell proliferation. As we have seen here, GISTs may arise as a result of mutant KIT proteins driving constitutive signaling for proliferation, growth, and survival. Imatinib can block this signaling to inhibit cell proliferation and induce apoptosis in many KIT-positive GIST cells. So this is how. अब आपने देखा इस पूरे पाथवे को कैरेक्टराइज पहले किया गया होगा, हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स आए होंगे, maybe thousands of researchers ने काम किया होगा। जब ये fully कैरेक्टराइज हो गया, only then they thought of कि अब हम कोई ऐसा inhibitor develop करें जो कि इस particular जगह पे bind कर जाए instead of the binding of activators. KIT continuously mutant है, but वो further अपना जो action है वो कर नहीं सकती because of the binding of the imatinib. और आपने ये भी देखा होगा कि कैंसर पेशेंट्स बहुत कमजोर होते हैं, ये वो वही बात है कि जो ड्रग है वो ब्रॉडली एक्शन कर रही है, वो नॉर्मल सेल्स में भी जाके अटैच हो रही है, तो वहां पे भी उसका एक साइड इफेक्ट आ रहा है।
ठीक है, तो वो आपने देखे कैंसर पेशेंट्स दे हैव सर्टेन साइड इफेक्ट्स, बालनेस हो जाती है या और बहुत कमजोर हो जाते हैं बिकॉज द नॉर्मल सेल्स भी डाई आउट हो रहे होते हैं. So when the drug was first given to patients with CML, nearly all of them showed a traumatic response with an apparent disappearance of the cells carrying the Philadelphia chromosome in over 80% of the patients. तो 80% patients में इसका एक apparent एक ऐसा response सामने आया, positive response. So how it harms, वो आपने वीडियो में भी देख लिया कि कैसे काम करता है. So the drug basically binds where the binding of the activators happen, and this block of binding results in no signal, no routine. अगर ये बाइंड ना करे तो फिर एक्टिवेटर्स आ जाते हैं और वो सेल्स को ये सिग्नल देते हैं कि आप प्रोलिफरेट करते रहें. So some anti-cancer drugs and drug targets in the ROS/MAP kinase signaling pathway. ये pathway भी हमने पढ़ा, थोड़ा सा brief पढ़ा, वैसे replication और cell division में ज़्यादा detail में हम पढ़ते हैं. So this is how like the whole pathway works. और आप देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ anti-cancer drugs और antibodies भी use हो रही हैं. ये पूरा एक pathway है. I mean, if you want to block this one, you may use trastuzumab, एक antibody है, और gefitinib drug है, erlotinib, ये मुख्तलिफ इनके नाम होते हैं. अगर A भी है तो antibody है और I भी है तो कोई drug है, ठीक है, antiviral. इसी तरह अगर आप इस वाले phase को block करना चाहते हैं, so then you may use this series of antivirals, or here this series of antivirals may work. If you want to block at this stage, you may use this series of antivirals. तो ये different antivirals हैं जो कि इस particular pathway की different stages पे काम कर सकते हैं. It may stop the pathway of the cancer cells to uncontrollably proliferate. अब ये इनके अपने अपने पाथवेज होंगे, ड्रग्स कैसे काम कर रही हैं, वो फुल कैरेक्टराइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कौन से रिसेप्टर्स को टारगेट करती है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ये फिर एक लेक्चर में कवर, ये अलग अलग या सीरीज ऑफ लेक्चर्स ये अपने अंदर ही है सारे. वो फिर आपको पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, और मे बी समवन हु इज एन एक्सपर्ट इन ऑन्कोलॉजी में, हम अभी आगे आएंगे ऐसे टीचर्स जो कि ये डॉक्टर्स हैं, सो यू मे आस्क देम, वो रियल लाइफ में इस पे काम कर रहे हैं. ठीक है. So now there is another option. Many cancers may be treatable by enhancing the immune response against the specific tumor. वहाँ मैंने checkpoint inhibitors की बात की, तो अब उनको भी देखेंगे. A simplest type of immunological therapy is to inject the patient with antibodies that target the cancer cells. Antibodies भी inject की जा सकती हैं. यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है, for example trastuzumab, एक antibody है, इसको आप जो कि बाइंड करती है स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स के साथ. ब्रेस्ट कैंसर्स फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस अनयूजुअली हाई लेवल्स ऑफ HER2 प्रोटीन. ये एक मार्कर है, बायोमार्कर है, प्रोटीन है जो कि आमतौर पे सिर्फ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में ये प्रोटीन प्रोड्यूस होती है. सो इट्स अ डायग्नोस्टिक बायोमार्कर. ये आप किसी का ब्लड, किसी पेशेंट का ब्लड लें और आपको HER2 प्रोटीन मिल रही है, अभी उसका कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई, पेशेंट बीमार है, किसी वजह से भी बुखार चढ़ गया, जो भी हुआ, एंड दे डिड द स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड सेल्स एंड दे फाउंड दिस प्रोटीन. सो दिस इज अ साइन दैट दिस पेशेंट may have breast cancer at a preliminary stage, या मे बी एट हायर ग्रेड्स. ये HER2 प्रोटीन है क्या? A receptor tyrosine kinase related to the EGF receptor that plays a part in the normal development of the mammary cells. A monoclonal antibody called trastuzumab, या trade name है इसका, brand name है Herceptin, that binds to HER2 and inhibits its function, slows the growth of breast tumors in humans that overexpress HER2.
नॉर्मली जो कैंसर सेल्स हैं ये ओवर एक्सप्रेस करते हैं HER2 प्रोटीन को, और ये प्रोटीन जो है जो मेमोरी सेल्स हैं, एपिथेलियम सेल्स हैं, उनकी नॉर्मल डेवलपमेंट में इसका रोल है। तो ये जो एंटीबॉडी है Herceptin or trastuzumab, it specifically goes in and stop HER2 from its functionality. और ये approved drug है, approved antibody है for the treatment of breast cancers. A related approach uses antibodies to deliver poisons to the cancer cells. So the antibody goes in, it is very specific, it doesn't attach itself to the normal cells, it will only attach itself to the cancer cells, so वो poisons भी deliver कर सकती है. It can deliver certain molecules that are poisonous for a particular type. और ये नैनो मेडिसिन का भी यही आइडिया है कि आप नैनो पार्टिकल्स को यूज करें कि वो स्पेसिफिकली जाके उस रीजन के साथ अटैच हो जाए एंड देन डिलीवर द poisons whatever to specifically kill the pathogenic cells or cancer cells. Antibodies against proteins that are abundant on the surface of a particular type of cancer cell but rare on normal cells can be armed with a toxin, a cytotoxin molecule that kills those cells that bind the antibody on. अब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, they are all like research proposals. क्या आप एंटीबॉडीज पे काम कर रहे हैं? आप सारों में तो काम कर नहीं सकते, ठीक है? You may be working on a particular receptor या पर्टिकुलर एंटीबॉडी या पर्टिकुलर एंटीवायरल या उस पूरे मैकेनिज्म के किसी एक पार्ट पे आप काम कर रहे हैं, ट्राई टू कैरेक्टराइज दैट पार्ट, एंड देन आपकी जो स्टडी है वो उस ब्रॉड नॉलेज का हिस्सा बनती जाती है। और लोग भी काम कर रहे हैं, वो अपनी फाइंडिंग्स दे रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, आप भी अपनी फाइंडिंग्स पब्लिक डोमेन में पब्लिकेशंस की सूरत में ला रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस में आप प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं और लोग सुनते हैं आपको। एंड मे बी whatever you are doing is significant enough to attract a pharmaceutical company to ask you, okay, come with us, work with us. The work you are doing is very interesting and we may work together to develop a drug. ऐसा होता है, स्पेशली जब आप बाहर जाते हैं तो कॉन्फ्रेंसेस में ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये बैठे होते हैं, वो आपकी प्रेजेंटेशन को देखते हैं एंड इफ योर वर्क इज सिग्निफिकेंट, अगर उनको वो अट्रैक्ट लगता है वो आपके पास फौरन आएंगे और आपसे कहेंगे आप हमें ज्वाइन करें, हमारी लैब्स को ज्वाइन करें, नाउ यू वर्क देयर। या आपको ऐसा भी होता है, ये तो हार्वर्ड में बहुत कॉमन है, MIT में, कि आप कोई एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और आप प्रेजेंट कर रहे हैं एंड अ फार्मास्यूटिकल कंपनी रिप्रेजेंटेटिव विल कम एंड आस्क यू, ये मॉलिक्यूल आप हमें दे दें, हाउ मच यू वांट। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे हैं। तो ऐसा भी होता है कि अगर आप एनिमल मॉडल्स तक चले गए हैं एंड यू थिंक योर मॉलिक्यूल इज वेरी सिग्निफिकेंट, यू विल आस्क देम ओके गिव अस $1 बिलियन। ऐसा होता है, वहां होता है ऐसा, और आप वो कहते हैं ठीक है ये लोग पकड़ो $1 बिलियन, अब ये मॉलिक्यूल हमारा हो गया, जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है आप हमें दे दें। सो दिस हैपेंस, इस तरह भी रिसर्च हो रही है कि आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं किसी स्टेज तक एंड समवन विल कम एंड विल गिव यू मनी टू टेक योर रिसर्च। अगर आप कहते नहीं मैं नहीं देता $1 बिलियन एंड यू कंटिन्यू योर रिसर्च, ठीक है, तो अगर उनको बहुत ही अच्छा लगा तो फिर बदमाशी भी है। फाइजर इज अ बिग कंपनी, GSK इज अ बिग कंपनी, वो फिर आपको मुख्तलिफ तरीकों से भी आपसे ये चीज छीन सकते हैं, और इस बारे में भी काफी मूवीज भी आई हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो बिकॉज दे आर बिग कंपनीज, दे आर जायंट कंपनीज, और ज्यादातर जो ड्रग्स है वो इन्हीं के थ्रू आ रही हैं, तो फिर वो मोनोपोली होती है उनकी, और ये मोनोपोली बन जाती है, जैसे आजकल मेटा की मोनोपोली है, स्पेस एक्स की मोनोपोली है, वो किसी भी, आपने भी देखा हो कराची के बच्चा जो है वो $60 बिलियन में उससे उसने खरीदी, दे हैव बिग पॉकेट्स, सो दे विल गिव यू एन ऑफर, गॉडफादर का एक डायलॉग है, दे विल गिव यू एन ऑफर दैट यू कांट रेजिस्ट। अब वो कहे कितने मांगते हो, आपके 100 बिलियन कह लो, 100 बिलियन 200 ले लो, so they have money here, they have the big pockets, they have deep pockets, तो फिर आप उनको रेजिस्ट नहीं कर सकते। और ये मोनोपोली आपको जगह जगह नजर आ रही है, इंटरनेट में आप देख लें, डिजिटल इंडस्ट्री में देख लें, आप शोबिज में देख लें, जो भी बड़ी कंपनीज होती हैं वो फिर अपनी बदमाशी जो है वो फिर चलाती हैं। बट दिस इज लाइक अ गुड थिंग फॉर यू इज लाइक यू कैन वर्क ऑन सम मॉलिक्यूल, आप किसी मॉलिक्यूल पे काम कर रहे हैं एंड यू थिंक दिस इज अ प्रॉमिसिंग मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे मैडम फरजाना शाहीन का एक मॉलिक्यूल है, इट्स अ प्रॉमिसिंग मॉलिक्यूल दैट वर्क्स अगेंस्ट द एपिलेप्टिक केसेस। आई डोंट नो उन्होंने शायद ये
ड्रैग को वो भी किया हुआ है, अभी डिटेल्स वगैरह दी हुई है। तो समटाइम्स लाइक यू वर्क ऑन समथिंग, इट्स अ प्रॉमिसिंग थिंग, देन यू कैन सेल योर प्रोडक्ट, आप उसको बेच भी सकते हैं, देन यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट। ये मॉलिक्यूल्स भी ऐसे ही बने होंगे किसी लैब में, और फिर ये आगे इसके राइट्स जो है वो आगे बेच दिए गए होंगे। दे मे हैव सोल्ड द राइट्स, द मैन्युफैक्चरिंग राइट्स टू दीज कंपनीज। So if we talk about the tumor's microenvironment, this is highly immunosuppressive. Cancers ने ये evolution किया है, they evolved to stop immune system from acting against them. ये immune system उन पे काम न करे, उन्होंने different तरीके बनाए हुए हैं। अभी हमने चेक पॉइंट इनहिबिटर्स की बात की, तो उनके अंदर अपने इनहिबिटर्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम को रोकते हैं कि वो उन पर एक्ट न करे। और ये CAR-T थेरेपी जो है अभी पाकिस्तान में भी हुई है, आई थिंक आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट में, वो इसी आइडिया पे है कि इस चेक पॉइंट को रोका जाए, ठीक है, कैंसर्स के चेक पॉइंट को रोका जाए ताकि इम्यून सेल्स स्पेसिफिकली जाके कैंसर सेल्स को अटैक करें। Cancer cells have evolved a set of anti-immune defenses, including the expression on the cancer cell surface of one or more proteins that bind to inhibitory receptors on activated T cells. कैंसर सेल्स है, इनके सरफेस पे एक भी हो सकती है या एक से ज्यादा प्रोटीन्स भी हैं जो कि टी सेल्स के इनहिबिटरी रिसेप्टर्स के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। These inhibitory receptors tells the T cells not to act on this cell type. ये उनके फंक्शन को इनहिबिट करते हैं। In normal conditions, the inhibitory receptors control, इनको हम check points भी कहते हैं, immune check points, control the immune response by down-regulating the T cell response under appropriate circumstances. Naturally, अगर ये check points ना हो, तो फिर ये round the clock killing होगी नॉर्मल सेल्स की भी। तो कुदरत ने ये रखा है कि टी सेल्स के जो फंक्शन है उसको चेक में रखा जाए। तो यह चेक पॉइंट प्रोटीन्स कि वो इस टी सेल को रोकती हैं नॉर्मल हालात में कि एक हद से ज्यादा आपने किलिंग नहीं करें। बट कैंसर्स दे एक्सप्लॉइट दिस थिंग, वो इन्हीं चेक पॉइंट्स को यूज करते हैं अपने बचाव के लिए। So that's why they tell about the cancer as a biological being in itself. वो बिल्कुल जो कैंसर्स होते हैं ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम की तरह बिहेव करते हैं। इट्स नॉट अ नॉर्मल डिजीज, ये एक अपने अंदर एक लाइफ है जो कि जब हो जाती है तो फिर अपने बचाव के लिए वो तमाम कोशिशें करती है जो कि एक नॉर्मल बायोलॉजिकल सिस्टम करता है। But in the context of a tumor, the down regulation is inappropriate because it prevents the organism from killing the cancer cells that are threatening its survival. So this information resulted in a new line of them. One of the many molecules involved in keeping the activity of the normal immune system within safe bounds is a protein called CTLA4. ये एक प्रोटीन है, एक चेक पॉइंट प्रोटीन है जो कि टी सेल के फंक्शन को कंट्रोल करती है। Cytotoxic T lymphocyte associated protein 4, which functions as an inhibitory receptor on the surface of T cells. T cells के surface पे ये protein होती है, it's a surface receptor, and once the signals bind to this receptor, it tells the T cells to avoid their function. If the function of CTLA4 is blocked, somehow आपने इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, the T cells become more reactive, फिर उनका वो inhibitory effect जो है वो खत्म हो जाता है, they become more reactive and they will mount an attack on cells that they would otherwise leave in peace. फिर ये सेल्स पे फुल फ्लेज अटैक जो है ये शुरू कर देंगे। In particular, the T cells may attack tumor cells that are recognizably abnormal but whose presence was previously tolerated. With this in mind, cancer immunologists developed a monoclonal antibody called iccbs that binds to CTLA4 and block its action.
ये एक सिंपल आइडिया था, एक मॉलिक्यूल या एंटीबॉडी उन्होंने डेवलप की जो कि स्पेसिफिकली जाके इस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर देती है और उसके इनहिबिटरी इफेक्ट को सो मे बी इस तरह की और प्रोटीन्स भी होंगे कैंसर्स में, मे बी आप कोई मॉलिक्यूल डेवलप करें, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप कहते हैं भाई ये जो एंटीबॉडी है ये काम तो कर रही है लेकिन ये इतना अच्छा काम नहीं कर रही, एंड योर रिसर्च इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस समथिंग better, or maybe you say okay, this protein is very good, excellent, but this is very expensive, not suitable for someone in the developing country, and your research is trying to develop something which is functionally parallel, जो कि functionally बिल्कुल इसकी तरह है but cheaper. इस तरह की रिसर्च की हो रही है पाकिस्तान में, इस तरह की रिसर्च बड़ी रेलेवेंट है कि आप एक सस्ती चीज बनाने की सोच रहे हैं, मे बी वो क्वालिटी में उससे कम भी हो सकती है, बट स्टिल इट इज विद इन द फाइनेंशियल रेंज ऑफ द जनरल पब्लिक. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हाउ ऑल दिस थिंग वर्क्स आउट. ठीक, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, यू मे जस्ट सी द सिंपल, या इट अटैचेस टू द रिसेप्टर एंड ब्लॉक इट्स एक्टिविटी. यहीं से पर्सनलाइज्ड इम्यूनोथेरेपी का आइडिया भी डेवलप हुआ कि एक पर्टिकुलर पेशेंट है, उसी के लिए दवाई जो है वो बनाई जाए, उसी के लिए एक ड्रग बनाई जाए जो कि जनरली एडमिनिस्ट्रेबल ना हो. तो कहते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, पर्सनलाइज्ड थेरेपी. The patient's tumor is molecularly analyzed to determine its particular mechanisms of immunosuppression. एक हर जो पेशेंट है that is genetically diverse, पहले पेशेंट के ट्यूमर सेल्स लिए जाते हैं, उनको फुली कैरेक्टराइज किया जाता है, उनका सीक्वेंस किया जाता है और देखा जाता है कि कौन सी प्रोटीन्स वो एक्सप्रेस कर रहे हैं इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए. एंड देन अ थेरेपी इज डिजाइन, एक थेरेपी फिर डिजाइन की जाती है जो कि उस पेशेंट की के कैंसर सेल्स पे काम करे. क्योंकि ऐसा आया है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हमने पढ़े हैं ये कुछ पेशेंट्स में तो काम करते हैं लेकिन कुछ में काम नहीं करते. This is because of the genetic diversity. उनके अंदर अपनी कोई म्यूटेशंस होंगी जो कि स्पेसिफिक होंगी उस पेशेंट के साथ, उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ. The patient would then be treated with a specific cocktail of antibodies designed to remove these flaws. Smarter CAR T cells target tumors with precision. ये है CAR T cell therapy, ये बड़ी मशहूर है आजकल, हो भी रही है. यू मे हैव टन्स ऑफ आर्टिकल्स इसके ऊपर हैं, इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं if you are interested. What they do is 2 studies in mice show that researchers can control when and where CAR T cells are active. This is very specific. The T cells will be active only at the site of the tumor, not a broad reaction, potentially overcoming previous hurdles for CAR T based treatments. इसको कहते हैं chimeric antigen receptors. T cells लिए जाते हैं, उनमें changes की जाती हैं और फिर patients में वापस administer कर दिए जाते हैं. And those changes they enable the T cells to specifically kill the patient's tumor cells. Every day, inside the body, tiny disease-fighting immune system cells, called T cells, find and destroy invaders, like bacteria, viruses, and cancer cells. They do this using something called a receptor. Like a key to a lock, T cell receptors locate and then attach to those invading cells and destroy them. The cancer cells are crafty. They can do things like make T cells exhausted and no longer able to fight, or block T cells' ability to bind to them. This allows cancer to grow unchecked. That's where a type of genetically engineered cell, called a CAR T cell, comes in. With CAR T cell therapy, scientists insert DNA into the patient's own T cells, enabling them to sprout cancer-specific receptors that are drawn to cancer cells. Cancer-fighting CAR T cells then circulate through the body, bind to and kill cancer cells, and multiply, so even more T cells can join the fight. At City of Hope, our scientists are testing a number of groundbreaking CAR T cell therapies to fight cancer.
To learn more about our program, including information about clinical trials, visit cityofhope.org/CAR-T. जी सर इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी ना कार्टी ऑफ कोर्स हर न्यू जो लाइन ऑफ थेरेपी है वो आपसे तमाम रिसर्च के पैसे ले रहे हैं ये इस तरह की जो थेरेपीज होती हैं ये बहुत सारी लैब्स में हो रही होती हैं आई टोल्ड यू दे विल चार्ज यू और आपको तो इम्पोर्ट करनी पड़ेगी वो चीज़ इम्पोर्ट चार्जेस वगैरह होंगे सो अगर आप अपनी नहीं बनाएंगे यू विल हैव ये जो कहते हैं ना पाकिस्तान में करप्शन है दिस इज माय ओपिनियन maybe you disagree with me कि करप्शन की वजह से आप पीछे नहीं है हम कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग अ सिंगल थिंग मैं रोनाल्ड रैगन का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था पुराना प्रेसिडेंट रहा है अमेरिका का तो उसने कहा मैंने इब्न खुल्दून की एक किताब पढ़ी जिसमें उसने लिखा था कि जिस मुल्क की इंपोर्ट्स उसकी एक्सपोर्ट से ज्यादा हो वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते सिंपल जुबान में आपका खर्चा आपके जेब खर्च से ज्यादा अगर आपकी तनख्वाह 4,000 है और आप 1,00,000 रुपए खर्च कर रहे हैं कौन सी ऐसी इकोनॉमिकल कैलकुलेशन है कि आप वो 1,04,000 में बराबर करने ये लोगों को क्या कहते हैं टोपी पहना के रहते हैं हमारे प्रोग्राम हम वर्ल्ड बैंक से इकोनॉमिस्ट ले आए हम दिस इज सिंपल कैलकुलेशन हमारी एक्सपोर्ट्स है ही नहीं आप बताएं हम क्या बना रहे हैं आपने कोई ऐसी चीज सुनी हम बना रहे हैं हम कोई मोबाइल फोन बना रहे हैं हम कोई ड्रग बना रहे हैं कुछ भी नहीं बना रहे ये जो हमारी एयरफोर्स कह रही है J7 भी चाइना ने बनाया हमने उसमें अपनी टेक्निकल सपोर्ट कोई दे दी होगी या नहीं दी होगी वरना भी हम मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग करप्शन हो या ना करप्शन मैंने चाइना में भी देखी है बहुत ज्यादा मेरे सामने मैं जिस यूनिवर्सिटी में था 10 दफा उसका उन्होंने फुटपाथ बनाया और तोड़ा दिस इज अ वे ऑफ करप्शन ठेकेदार आते हैं वो पूरी सड़क बनाते हैं फिर वो साल बाद दोबारा वो तोड़ के तो ये चाइना मैंने बहुत देखा और इवन सऊदी अरेबिया में वहाँ एक और तरह की करप्शन वहाँ ये रिश्वत सतानी को वो तोहफा कहते हैं कोई काम तू करेगा आके दुआ लोगेगा मैंने तो हदिया दिया है तोहफा दिया है खैर व्हाटएवर तो वहाँ पे हमारा जो प्रोफेसर था जो मेरा बॉस था वो हर साल अपने ऑफिस का फर्नीचर चेंज करता था और वो फर्नीचर बड़ा अप टू डेट किस्म मेरे ख्याल से लाखों करोड़ों का होगा कंप्यूटर उसका मतलब कितने 50 लाख का था उसने रखा हुआ था वो ऑफिस में शायद एक ही दिन आता था कभी साल में आता भी नहीं था आ जाता था वो तो इस तरह की करप्शन हर जगह पे है इसको आप रोक नहीं सकते आई मीन करप्शन इज समथिंग दैट इज योर इनर अगर आप करना चाहें तो आप कोई आपको रोक नहीं सकता आई मीन कोई भी इट्स लाइक अ कैंसर बट द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान आई थिंक इज लाइक वी आर नॉट स्किल्ड नेशन अभी ये टिम कुक है ये एप्पल का बड़ा था तो इससे उसने सवाल किया कि आप चाइना में क्यों एप्पल फोन जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो इसने कहा कि चाइना में इस वक्त जो टूलिंग इंजीनियर्स हैं टूलिंग इंजीनियर्स वो होते हैं जो आपके जो इसके अंदर पेज बना रहे हैं जो बहुत ही माइन्यूट पार्ट्स हैं इनको टूलिंग इंजीनियर्स कहते हैं नॉर्मल इंजीनियर्स नहीं होते दे आर स्पेसिफिकली ट्रेन्ड टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग वो कह रहा है कि वहां पे इतने ज्यादा है कि जब हम जॉब के लिए कॉल देते हैं तो thousands or hundreds of thousands of tooling engineers appear. और अपनी एग्जांपल दे रहा था कि यूएस में अगर हम ऐसा करें तो 10-15 भी ना आए इस वक्त चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर इस वजह से ज्यादा है कि they have created a skilled population. वहां पे आपको मैं आपको एक और एग्जांपल दूं अब यहाँ के हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं ये सीट पे बैठना चाहते हैं तो हमारी लैब में कैबिनेट्स थी तो कैबिनेट्स थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था उसमें दरवाजे सही नहीं लगे हुए थे स्टील की कैबिनेट्स होती हैं जिसके अंदर हम सामान लैब में अगर आपने देखा हो सामान वगैरह रखते हैं मैंने अपने आई वाज द लैब मैनेजर देयर तो मैंने अपने प्रोफेसर को लिखा कि ये कैबिनेट मुझे थोड़ी कमजोर लगती है गिरने वाली है तो हम किसी को बुलाते हैं किसी इंजीनियर को कि वो वेल्डिंग वगैरह कर दे उसने मुझे कहा कि किसी और को बुलाने की क्या जरूरत है हमारे यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं ना उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के चेयरमैन को कॉल की और वो चेयरमैन खुद आ गया He brought all the tools with him और उसने अपने हाथ से वो सारी वेल्डिंग की कुंडियां दोबारा लगाई चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट उसने वही सूट पहना हुआ था इंजीनियरिंग वाला तो मैं बड़ा उससे इम्प्रेस हुआ मैंने कहा ये आप किसी को भी बुला सकते थे उसने कहा वो इंजीनियर ही किया जो कि फील्ड में काम न कर सके दिस इज अ प्रॉब्लम वी हैव सो वी डोंट हैव अ करप्शन प्रॉब्लम I think the problem we have is कि हमारे पास skilled population या आपने इतनी थेरेपीज जो पढ़ी है इसमें से कौन सी पाकिस्तान ने इन्वेंट की है कौन सी बनाई है
अरबों रुपए तो ICCBS में लग चुके हैं. But we haven't produced a single thing in ICCBS. So this is the problem. अगर ये problem चलता रहा तो आप IMF से कर्जे लेते रहेंगे. ये कहानियां हैं कि कोई अच्छा हुक्मरान भी आ जाए. So what they will do? Nothing. Because we are importing everything. और जैसे जैसे ये इमरान खान साहब की बात कर रहे थे, कहते जैसे पाकिस्तान तरक्की करता है वो और ज्यादा इंपोर्ट शुरू हो जाती है. तो ये भी एक प्रॉब्लम है. जैसे हमारी आबादी के पास पैसा आता है वो और चीजें इंपोर्ट करने. We start importing mobile phones or भी computers. We are importers basically, consumers. We are not developers. Sir, actually we are not only importing, हम smuggle भी कर रहे हैं. जो भी, but we are importers. Generally हम अपने आप को importers ही कहेंगे. गाड़ियाँ हम import करते हैं, bikes हम import. General usage की आप इस कमरे को देख लें. इसमें कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल सब Chinese made है. Everything will be Chinese made. Even जो Western भी होगी वो भी manufacture China में ही हुई होगी. जिस कंप्यूटर से लेके बल्कि अब तो बिल्डिंग मटेरियल भी चाइना से आ रहा है. ये जो आपकी ये जो टेबल्स बनती हैं इसके डायरेक्ट पैनल्स जो है ना ये चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं. लकड़ी भी हम आपको से नहीं बना रहे हैं. वो मैंने एक दफा बनवाई थी एक अलमारी को. उसने मुझे कहा, वो बनाने वाला कहते हैं चाइना से डायरेक्ट पैनल्स आते हैं. मैंने कहा आप लोग कहते हैं सस्ते पड़ते हैं, अगर हम खुद बनाए तो वो बहुत महंगे होंगे. तो वी डायरेक्टली इंपोर्ट दीज पैनल्स फ्रॉम द चाइनीज कंपनीज. ये कुर्सियां जिस पे आप बैठे हैं मेरी ये भी चाइना से ही बन के आ रही होंगी. यहाँ पे वो बना लेते हैं मटेरियल वहीं से आता है. सो दिस इज द प्रॉब्लम नाउ. व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग द ड्रग्स, द डेवलपमेंट्स, जो भी हमने इस कोर्स में जो भी डेवलपमेंट्स हमने डिस्कस की ये सारी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है. हमारी अपनी कोई टेक्नोलॉजी. दिस इज अ शेम. There are many different strategies by which cancers can evolve resistance to anti-cancer drugs. BRCA deficient cancers, resistance to PARP inhibitors. ये आपने पढ़ा, वो PARP inhibitors से भी resistance को develop करते हैं. Undergoing a second mutation in an affected BRCA gene that restores its function. In some cases, cancer cells escape death because they carry a protective mutation or epigenetic change, or perhaps simply because they were lurking in a protected environment. तो ये अपने अंदर और भी changes. आप एक line of therapy देते हैं, वो एक नई mutation करके they try to resist the effectiveness of that therapy. For example, we have MDR1 ABCB1 gene. And mutations happen in that gene. In some cases, cells that are exposed to one anti-cancer drug evolve a resistance not only to that drug but also to other drugs to which they have never been exposed. ये एक प्रॉब्लम है और इसका हल जो है वो मल्टी ड्रग थेरेपी है. यानी एक ड्रग से नहीं बल्कि बहुत सारी ये बैक्टीरियल रेजिस्टेंस की तरह है जहां आप एक ही वक्त में फिर कॉम्बो एक से ज्यादा एंटीबायोटिक्स देते हैं बैक्टीरियल सेल्स की किलिंग के लिए. So this phenomenon of multi-drug resistance frequently correlates with amplification of a part of the genome that contains these two genes. ये दो genes जो है ये resistance के साथ इनका ताल्लुक है कैंसर सेल्स में. This gene encodes a plasma membrane bound transport ATPase of the ABC transporter superfamily. एक transporter protein superfamily है जिसका ये part है. Basically, it transports the drugs into the cells. So, combination therapies may succeed where treatments with one drug at a time fail. So, treat with drug A, simultaneous treatment with both drugs A and B. So, if you treat with a single, then what happens? The cancer cells, they develop resistance against that drug by mutations in specific genes. Then you try to treat the same cancer cell with another drug, but then eventually over the time the cancer cell will develop resistance against that drug B as well. So avoid this thing. They simultaneously administer 2 or 3 drugs at the same time. इसको कहते हैं मल्टी ड्रग थेरेपी, ताकि उसको टाइम ही ना मिले कैंसर सेल को इवोल्यूशन के लिए. Or rational combination drug therapy also works. Efficient rational combination drug therapy requires 3 things. First, we have to identify multiple peculiarities of the cancer cells. Then, we have to devise drugs or other treatments that target each of these
vulnerabilities. इसके लिए आपको पहले कैंसर सेल्स को fully characterize करना होगा कि उनके weak points क्या हैं. Once you identify the weak points, then you can design specific therapies. Rational कहते हैं आपने एक स्टडी की और उसके बाद आपको मुख्तलिफ ऐसी थेरेपीज मिली जो कि काम कर सकते हैं. Third, we have to match the combination of drugs to the specific set of peculiarities or specifics present in the cancer cells of the individual patient. Now, there are certain developing new tools to fight the cancers, antibody drug conjugates, where you combine the drugs with antibodies. This is a novel paradigm for cancer therapy. Chemotherapy is one of the most widely used anti-cancer therapies. However, it often causes serious side effects. Antibody drug conjugates are promisingly emerging cancer therapies that combine the effective killing power of small molecule cytotoxins and the highly specific targeting ability of monoclonal antibodies. क्योंकि ये देखा गया कि अगर आप कीमोथेरेपी अलोन दें तो जैसे मैंने पहले कहा वो राउंड द क्लॉक ब्रॉड किलिंग करती है और पेशेंट्स की जो प्रोग्नोसिस है वो काफ़ी ग्रिम है, कि जो लाइफ है कम्स मिजरेबल. तो यहाँ पे ये दो चीज़ें यूज़ करते हैं. दे यूज़ द पावर ऑफ monoclonal antibodies to specifically target the cancer cells, and then they have the drug conjugate that is attached to the antibodies as well. वो एंटीबॉडीज जाके कैंसर सेल्स के साथ अटैच हो जाती हैं और ड्रग्स फिर उन पे काम करती हैं. Thus, ADCs precisely deliver cytotoxins to tumor cells. The first generation ADC, gemtuzumab ozogamicin, was approved by the US FDA in 2000. काफी पहले ये अप्रूव हो चुकी है. Since then, multiple ADCs have been approved worldwide, and more than 100 ADC candidates have entered the clinical phase. Okay, the good fight deserves great tools. We have new tools. We have cancer genomic analysis, where we can study the genomes of patients and then devise personalized therapies. The rapid advancement of sequencing technologies over the last 2 decades have delivered unprecedented insights, replacing more cumbersome low-resolution techniques. अब वो पुरानी karyotyping fish वगैरह अब खत्म होती जा रही है, and the NGS technology can precisely give you the sequence of a cancer patient, जिसके जरिए आप mutations भी identify कर सकते हैं और फिर वो genes भी identify कर सकते हैं जिनको आप target कर सकें. आप मशीन लर्निंग, इसी सीक्वेंस डेटा को आप मशीन लर्निंग के जरिए या एआई के जरिए भी कैरेक्टराइज कर सकते हैं. इस पे आप ये वीडियो भी देख लें या इसकी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे वो आपको ये इन्फॉर्मेशन देती है कि कैसे आप मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, बेसिकली बिग डेटा एनालिसिस है जहाँ पे पास एक बहुत बड़ा डेटा आता है, यू कैन नॉट मैन्युअली एनालाइज इट, सो देन यू यूज डिफरेंट मशीन लर्निंग टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स कि इसको आप एनालाइज कर सकें और फिर यू मे यूज दैट डेटा टू डेवलप डिफरेंट थेरेपीज. CRISPR भी यूज हो रही है, ठीक है, ये जीन एडिटिंग टेक्निक है. इट कैन कट द जीनोम्स ऑफ द टारगेट जीन्स, सो इसको भी यूज किया जाता है टू स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई एंड कट द जीनोम्स ऑफ कैंसर सेल्स. द फर्स्ट ट्रायल इन द यूनाइटेड स्टेट्स टू टेस्ट अ CRISPR made cancer therapy was launched in 2019 at the University of Pennsylvania. The study, funded in part by the NCI, is testing a type of immunotherapy in which patients' own immune cells are genetically modified to better see and kill their cancer counterparts. Self-charging battery battles tumors in mice. A battery that charges itself in salty fluids starves tumors of oxygen. जहाँ कैंसर है वहाँ पे आप ये बैटरी, अब ये देखिए कितनी डाइवर्सिफाई ये फील्ड है. इंजीनियर्स भी इन्वॉल्व हैं इसमें जेनेटिसिस्ट भी इन्वॉल्व हैं, इसमें इम्यूनोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व हैं, इसमें जीनोमिक्स के लोग भी इन्वॉल्व हैं. यहाँ पे एक बैटरी उन्होंने ऐसी बनाई है जो कि कैंसर सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचने से रोकती है. So
what maybe where the tumor is, they will put the battery, कुछ छोटी माइक्रो बैटरी होगी from oxygen, और जिसकी वजह से वो किल होना शुरू होगा. Electric field disrupt cancer cell division, a novel non-invasive treatment using electrical currents exploits physiological properties of dividing cancer cells. आपको पता है जो इलेक्ट्रिक करंट है ये काफी इन्वेसिव होता है, बट ये एक ऐसे लेवल पे यूज कर रहे हैं जहां आपको पता तो नहीं चलता कि आपको इलेक्ट्रिक करंट लग रहा है, बट व्हाट हैपेंस इज इट स्पेसिफिकली स्टॉप्स द कैंसर सेल्स फ्रॉम डिवाइडिंग. So this is a new line of therapy as well. Then nanotechnology, जैसे पहले हमने antibodies का जिक्र किया, इसमें nanotechnology भी है that can use nanoparticles to specifically deliver cancer drugs. They use bacterial syringes to inject drugs directly into human cells. ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि specific cells को टारगेट करते हैं, तो उन बैक्टीरिया के अंदर भी आप मुख्तलिफ ड्रग्स जो है इंसर्ट कर सकते हैं, मे बी जेनेटिकली और नॉन जेनेटिकली, टू स्पेसिफिकली किल द कैंसर सेल्स. नाउ यू सी, अब ये सारी इनोवेशन हो रही है. दे नो द प्रोसेस. उन्होंने पूरा एक इकोसिस्टम बिल्ड कर दिया है. इस वक्त यूएस में, चाइना में आप हर रोज एक न्यू इनोवेशन हो रही है. डीप सीक जो मॉडल बना था मैडम, ये ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने बनाया था, चाइनीज ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, जो कि आपके बीएस के अमेरिकन चैट जीपीटी का मुकाबला करते हैं. तो क्या हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इतने पावरफुल है? मैंने तो ये देखा उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता. एक स्टूडेंट मेरे पास आई थी इंटर्नशिप के लिए एंड शी गॉट 99% मार्क्स इन माइकोलॉजी, जो फंगस होती है. तो मैंने उससे पूछा कैंडिडा के बारे में पता है? कहते ये क्या होता है. So how she managed to get more than 90% marks just by rotting, रट्टा लगा के. तो ये रट्टा और नकल वाला सिस्टम अब नहीं चलेगा इस इन्वायरमेंट में. अब अगर कोई ये समझता है वैसे बारिश करके आगे चला जाऊंगा, वो पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट जॉब में तो जा सकता है, बट इंटरनेशनल सिस्टम में कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई भी सिफारिश नहीं. अगर आप किसी भी कैम्ब्रिज या हार्वर्ड की किसी लैब में चले गए पीएचडी करने, तो जरा आप उनके बच्चों का हाल देख लें जाके. दे विल पुट यू टू इमेंस टेस्ट. वो आपके दिमाग को सही यूज करेंगे. और अगर आप में एबिलिटी नहीं है, बल्कि मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि हार्वर्ड पे जॉब मिलना आसान है, बट टू सस्टेन द जॉब इज वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि आपके ग्रुप में हर बंदा हर साल नेचर, साइंस या पीनेस में पब्लिश कर रहा होगा, वो अपनी फील्ड का माहिर होगा. उसकी बात करने का अंदाज आप देख लें, आप कैम्ब्रिज के रिसर्चर से मिलें और आप उसकी बात करने के अंदाज से ही समझ आ जाएगी कि वो बात कैसे. दे आर वेरी कॉन्फिडेंट and they have deep knowledge. मैंने कई लोगों से मैं मिला और हार्वर्ड के प्रोफेसर से, they are excellent personally, और जो उनके पास नॉलेज होती है, अगर आप उनसे 5 मिनट बात करें ना तो 100 पेपर्स पढ़ने से ज्यादा होता है. they are knowledgeable people. ये उनके सिस्टम की पावर है. और मुझे एक रिसर्चर भी बता रहे थे कि हमारी जो कनाडा में, वो कह रहे हमारा जो स्ट्रॉन्ग जो बैकबोन है वो अंडरग्रेड. जो अंडरग्रेड से हमारे पास बच्चे आते हैं ना, दे आर और बैकबोन. वहीं से हम उनको पिक करते हैं कि ये पर्टिकुलर बच्चा जो है ये ही और शी इज टैलेंटेड, और वहीं से उसको ग्रूम करते हैं. फिर हमारे यहाँ पे जो टैलेंट है उसको दे ट्राई टू किल द टैलेंट. तो अनटिल हम इस सिस्टम को करेक्ट नहीं करेंगे, तो these innovations will keep coming from the west. We won't be able to do anything. कॉन्फ्रेंसेज अरेंज करना, सेमिनार, इस तरह के लेक्चर्स देने से कोई फायदा खास तौर पे नहीं होगा. जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप चैट जीपीटी से भी ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. आई मीन यू जस्ट टाइप ऑन व्हाट इज कीमोथेरेपी, व्हाट इज BRCA1, व्हाट इज, अभी आपके सामने आपका सवाल मैंने चैट जीपीटी पे पुट किया. सो दिस इज इंफॉर्मेशन, ओके, फेयर इनफ, बट दिस इज यूजलेस nowadays. Information is there, you have to be like up to the mark. So there is still far to go, but the examples that we have discussed in this class provide proof of principle and grounds for optimism. These are some of the ads जो ये इश्तिहार जो न्यूज़ में आते रहते हैं. They found cancer therapies, they find new lines of treatments,
in different universities, and you see all of this news is coming from the US. Western world से ये सारी innovations आपको मिल रही होती हैं. So we are not the ones who are actually producing anything. This is the sad news. And we end the lectures. अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो एग्जाम जो होगा वो सिंपल होगा, ठीक है. आप मे बी 20 मार्क्स का एग्जाम जो मेरे पार्ट का होगा, द टोटल विल बी 100. तो इसमें और टीचर्स भी हैं. सो माय एग्जाम विल बी ऑफ 20 पार्ट्स, जिसमें कुछ एमसीक्यूज होंगे और कुछ आप छोटे क्वेश्चंस, ब्रीफ आंसर 1 और 2 लाइंस में आप उनका आंसर दे सकते हैं. ये एग्जाम विल नॉट बी डिफिकल्ट. आप अगर इन लेक्चर्स को देख लें, जो स्लाइड्स इसमें है, the videos are excluded. Videos से कोई एग्जाम क्वेश्चन नहीं होगा. दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. जो स्लाइड में मेन इंफॉर्मेशन है बस वही आप देख ले, वही आपके एग्जाम में होगी. वो इंफॉर्मेशन इससे मुताबिक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे. You just go through these slides before the paper and you'll be able to get 2 marks. So, do you have any questions? मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर वैसे कैंसर होता है लोगों को, लेकिन फिर जब उनका ऑपरेशन होता है तो उस वक्त वो कैसे बढ़ते हैं? जी, जैसे ऑपरेशन हो जाता है. ऑपरेशन हो जाता है, जैसे एक कैंसर है, और सर अगर फिर वो उस पार्ट की सर्जरी कराते हैं तो फिर उनको डायग्नोज होता है वो पार्ट. वो तो वही ना, कैंसर स्टेम सेल्स का हमने पढ़ा था. स्टेम सेल्स के 1 या 2 सेल्स बाकी रह जाते हैं. वो अभी आपके पास जो नेक्स्ट जो आ रहे हैं ना इसी सीरीज में, वो डॉक्टर्स आ रहे हैं आला खान से. आई थिंक शायद परवेज साहब हैं, वो तो करीब ट्रीटमेंट खुद रहे हैं. ठीक है. तो जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी. आई डोंट डू रिसर्च इन कैंसर, बट दे आर द ऑन्कोलॉजिस्ट. आप